Welfare, DGHS office. I like to invite you today on this webinar, which has been particularly designed to make you aware about the various addictions which the country is facing, the people are facing, and we are struggling to get rid out of this. This webinar series has addressed many NCDs in the past, and we generally make it a point that we take a one particular day, it's like a hypertension day or a diabetic day or obesity day, and we try to raise the awareness, and particularly amongst our workers, our healthcare workers, our doctors, our medical professionals, our nurses, who all are spread across the country, so that we can benefit from the expert guidance which we call on this webinar, who could teach us, who could make us aware the basic things about that particular NCD, and so that we also come to know about the practical things which we need to do in our practice. So today, to celebrate or to observe the World No Tobacco Day, which was on 31st of May, we have with us Dr. Prabhat Chand. Sir is a professor of psychiatry, and he has got special interest and has worked a lot on de-addiction of tobacco and alcohol. And he's an addiction specialist at NIMHANS, Bengaluru. So today, sir will be, of course, presenting and has already shared what he will be doing with the participants via link, his content, what he has prepared. But also, he will like to interact in a very unique manner, what sir has just told, that probably he will be sharing a link with you and you will be participating in a quiz, in a say an awareness quiz, where you all can answer on that particular questions, and then it will of course reinforce the knowledge about the addictions, and we all will be learning from the sir's knowledge. So Dr. Prabhat, please take over from me, and we are delighted to have you on this platform, sir. Sir, thank you very much, sir. Am I audible? Yes, you are audible, sir. Just want to check, sir, am I audible from my side? Yes, sir, perfectly audible. Please go ahead. Are we audible to you, sir? Yeah, I'm getting some echo from here. I'm just trying to figure out. Might be you have joined two devices at the same time. No, the another device sir has not connected the audio. Okay. Sir, maybe the speaker you can select them as system, sir. That will work. Yes. So I'm kept echo cancelling speakerphone. Should I change this one? You can change it to same as system, sir. Is it okay now? Yeah. Yes, sir, we can hear you. Okay, let me see. There is some echo coming from my side. Let me see if it's working or not. Okay. Should I go ahead, Manju? Yes, sir. Perfect. Thank you, Professor Agarwal. I think thanks Ministry for the time and for the talk, and thank all the doctors who joined from 7 odd doctors, and thank Echo India for doing it. So what I will do for next couple of minutes that I have with me, I will just tell you about the agenda of the program. Then we can go ahead about the yeah. Okay, let's start a small quiz, and before you go, Manju, can you share the screen and we can have a small quiz? Yes, sir. So I've shared a link in the chat box. So you just click on the link so that it will redirect you to the quiz. And meantime, we can share the quiz in the system also. So Manjunath, I would request you please both languages, Hindi and English, because participants are from Pan India. Sure, sir. Sure. Yeah, thank you. या तो मैंने एक जूम चैट बॉक्स में एक लिंक डाला है, तो आप लोग वो लिंक क्लिक करने से इट विल टेक यू टू द स्लाइड ऑफ दिस. Great, people are participating. Yeah, पहला सवाल ये है कि दिस इज ट्रायल 1. कौन सा सुपर पावर आपको चाहिए, मतलब कौन सा सुपर पावर आपको चाहिए? माइंड रीडिंग, मतलब मन को पढ़ सकते हो. टेलीपोर्टेशन, मतलब बड़े शहर में हो तो आप पहुंच नहीं पाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली नेट जैसे आपको पहुंचा देंगे लोग.
आपको लगता है कि आपको सुपर ऑलरेडी है और आप इनविजिबल होना चाहते हो या फ्लाई करना चाहते हो. सो आई जस्ट फॉलो दिस, देन आई कम टू द टॉपिक, सो दैट आपको एक यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. Okay, so I think many people are talking about mind reading. That's interesting. So volume is low. Am I clear now? I think for us it's perfectly all right, sir. Okay. That's some issue somebody has. Okay, so I think the majority answer is about mind reading. The advantage of this quiz is this anonymous quiz. कहीं आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप आता रहेगा ये, और आपका क्वेश्चन भी आप यहाँ डाल सकते हो. Okay, Manju, go to next question, please. Okay, आप समय के साथ जा सकते हो, तब किसको मिलना चाहते हो? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब थोड़ा पीछे होना चाहिए, पीछे, या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन? आप समय के साथ जाना चाहते हो तो किसको आप मिलना चाहते हो? इट्स सो नाइस कि 120 125 लोग out of 866 is still men. They're active and they're present at this point of time, because हम सबको पता है कि दिमाग हमारे कैसे चलते हैं, इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, हर आदमी का आते रहते हैं. बट आई एम सो ग्रेटफुल कि 150 लोग अभी आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो. Yeah, thanks, Madhusmita. Father, mother, and grandma, absolutely, all of us obviously like to. राइट. सो 160, प्लीज प्रैक्टिस दिस वन, क्योंकि क्विज है, क्विज में प्राइज भी है जो कि एनसीटी रिलेटेड क्विज है, पर थोड़ी देर के बाद आएगा. बट आई थिंक सेम सिस्टम रहेगा. प्लीज प्लीज सॉर्ट ऑफ गेट फेमिलियर. नेक्स्ट मंजू, लेट्स गो वन स्किल. ओके, क्विज में ज्वाइन कर लो आप लोग. आप जस्ट आपको नाम ही टाइप करना है, अपने आप क्विज में आ जाओगे आप. आई ऑल्सो जॉइन इन द क्विज नाउ. जस्ट लेट मी स्कैन दिस कोड. हाउ इज द कोड गॉन? Okay, so this will be a trial quiz to make it familiar. Then I go to the NCT quiz, then presentation and finish. By 12:30, 12:25, I will close everything. So don't worry much कि भाई कोई पावर पॉइंट नहीं रहेगा प्रेजेंटेशन में पूरा ही पूरा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है. So, मेरा प्रोफेसर बोलते हैं कि आपको if you want to make somebody sleep, do PowerPoint. Best sleep medicine. This is my professor tells me. So I have कई सालों से मैंने पावर पॉइंट बनाना छोड़ ही दिया है ऑलमोस्ट. चलो ठीक है, ज्वाइन कर लें कुछ में. और कोई बाकी है प्लीज कर लो. 5 क्वेश्चन इस ट्रायल में, 3 क्वेश्चन है, फाइनल में 5 क्वेश्चन है. देन वी हैव ए स्मॉल प्रेजेंटेशन. आप नाम, आप राइट द नेम प्रॉपरली, क्योंकि हमें जो प्राइज देना होगा ना टॉप 5 को, सो यू हैव टू, मतलब हमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ना. भाई कोई एमडी नाम दे दे तो उसको कैसा पता लगे कौन है. तो थोड़ा सा ये एनोनिमस क्विज है, कोई आपको टेंशन बात नहीं है. आपको किसको नहीं पता लगा आपने कितना स्कोर किया है. बिल्कुल एनोनिमस है. कैसे ज्वाइन करना है? मुझे कैन यू जस्ट सेंड चैट अगेन? somebody asking that. People are asking how to join. Yeah, Manju sent it. Okay, now we'll wait for only 2 seconds and start. 211 अभी ज्वाइन कर दो. बेसिकली हम लोग चैट में लिंक भेजा है, आप लोग वो क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी ब्राउजर यूज करके slido.com टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं. इट विल आस्क यू द इवेंट कोड NCD है, और स्क्रीन में QR कोड दिखा रहा है, उसको भी स्कैन करके भी आ जाए. Okay, that's good. 238 people are living at present. एक हम सबके लिए जो दुनिया में आजकल जमाने में जितने लोग हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे काम इतने होते हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक ये वो, तो हमें एट प्रेजेंट बचना बड़ा मुश्किल हो गया है. तो मैं अवधेश जी मुझे पूछा, भाई आपको व्हाट्सएप क्यों नहीं है? आई थिंक पंकज आसमी. मैंने भैया मैं तो व्हाट्सएप डिटॉक्सिफिकेशन में अभी हूँ, कि मुझे लगा कि एक टाइम की मेरा एडिक्शन हो रहा है व्हाट्सएप का. तो मैंने आई थिंक पंकज मस्ट बी एंग्री विथ मी, बट बोला पंकज भाई देखो, मैं तो व्हाट्सएप से निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे से हो नहीं पा रहा है. तो पहले 6 महीने से मैं व्हाट्सएप में नहीं हूँ कि मेरे से हो नहीं पाया. तो इसीलिए एक
इस क्विज में 288। ओ अरे बाप रे, कब स्टार्ट करना है बताओ? इतने जन कर 300 पीपल। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग यार। आई डोंट नो। अवधेश जी, पहले कभी इतने लोग ज्वाइन किए एक्टिवली? सुने तो होंगे लोगों ने, बट इतने ना। यस सर, एक्टिवली लोग आते हैं, क्विज ज्वाइन करते हैं, बट दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम दे आर ज्वाइनिंग वेरी लाइक पूरा अटेंशन के साथ वो ज्वाइन किए हैं, एंड आई एम ओके वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। अदरवाइज खत्म। ओके ओके, गिव मंजू 1 मिनट, 10 सेकेंड्स, क्योंकि फिर हमें बंद करना पड़ेगा। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर अंदर में घुस नहीं सकता आदमी कुछ के लिए। तो 10 सेकंड में जल्दी जल्दी कर लो जो करना है। ओके मंजू, स्टार्ट। आई थिंक शुड नॉट डू इट, टाइम निकल जाएगा हाथ से। ओके स्टार्ट, फर्स्ट वन। ओके, ये ट्रायल इसलिए पूछ रहा हूँ, सवाल ये है ना, क्विज, ट्रायल क्विज है। पिछली बार जो मैच हुआ था पंजाब और मुंबई इंडियन में, जीता किसने? अब एनोनिमस से किसी मार सकते हो, कोई मतलब नहीं आपका। आज आईपीएल का फाइनल है, सो देखो कितना बढ़िया आंसर है। 40% लोग 190 से। परफेक्ट। सो वेरी गुड। आई थिंक इसका मतलब आप मैच नहीं देख रहे हो, आप अच्छे काम कर रहे हो। रात को 2 बजे तक मैच देखने को इज नॉट ए गुड हैबिट एट ऑल। सो आई थिंक यू आर डूइंग वेरी गुड। 40% लोग एक्चुअली मेंटली हेल्दी है इसमें, जो कि मैच देखे देखे नहीं उन्होंने। चलो एक्सलेंट, नेक्स्ट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? एक जनरल क्वेश्चन से ट्रायल है, उसके बाद फाइनल स्टार्ट होगा। आपको एक टाइमर आता है, उसमें देखते रहना कि 12 सेकेंड्स 11 सेकेंड्स आ रहे हैं, तो प्लीज रेस्पॉन्ड बिफोर द टाइमर क्लोजेस। मैं इसीलिए ट्रायल दिया आपको। देखते हैं क्या आ रहा है आंसर इसमें। ओके, अभी 214 लोग, 214 लोगों ने दिया। और मुझे नोट गिव आंसर, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। एक बढ़िया आंसर आया मतलब। पर्थ 4% सोच रहे हैं, मतलब करीबन, या 40%, 50 लोग। सिडनी 120 लोग। कैनबेरा करीबन 50 लोग। और मेलबोर्न 50 लोग। आंसर देखते हैं कौन सा है अभी। मंजू सो आंसर। या देखो आप, इतना बड़ा कंट्री है, इतने लोग जानते हो आप लोग। सो आंसर है कैनबेरा भाई। करेक्ट, कैनबेरा आंसर है। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन मंजू, लास्ट वन एंड गो टू नेक्स्ट आवर। या ओके, नाउ ये क्या बता रहे हो कि मॉडरेट ड्रिंकिंग बोलते हैं कि सोशल ड्रिंकिंग इंडियन लोगों के लिए सेफ है या अनसेफ है, इस पर स्टडी के हिसाब से? नहीं कि भाई दुकान वाला क्या बोल रहा है। एज पर द स्टडी, इंडियन ड्रिंकिंग इज सेफ और अनसेफ। हाउ आनंद जी, वो एक क्यूआर कोड आता है ना, उसमें करो, या slido.com मंजू ने भेजा है, चार्ट में देख लो। ओके लेट्स सी आंसर। ओके राइट, सो विल डिस्कस मोर अबाउट दिस मॉडर्न ड्रिंकिंग का मतलब क्या है। और यू नो आई थिंक व्हाट द आंसर फॉर दिस इज, मॉडर्न ड्रिंकिंग इज सेफ फॉर मेडिटेरियन कंट्रीज where red wine has been studied extensively and found to be safer for the Mediterranean countries। जैसे आप पता होगा इटली जर्मनी मेडिटेरियन कंट्री होता है, बट वहां पर बोलते जय सत्कार बहुत है। बट इन इंडियंस, मल्टी सेंटर स्टडी हुआ है कुछ साल पहले, बहुत बड़ा स्टडी था। दे फाउंड मॉडरेट ड्रिंकिंग डज नॉट प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम कार्डियक इवेंट्स, है ना। तो इंडियन के लिए नो ड्रिंकिंग बेस्ट है। आई मीन दैट रीजन में इसलिए बताया कि कई लोग आपको पूछेंगे सवाल, सर हफ्ते में एक पैक ले रहा हूँ, ठीक है नहीं है। ओके ओके, लेट्स लेट्स गो अहेड एंड मंजू सो द विनर्स फर्स्ट। ये ट्रायल था, ये ट्रायल में हमारे अरुण कुमार जी विनर हैं, और प्रतीक जी सेकंड, और सब लोग एक्चुअली विनर है। मगर टाइमर देख लो आप, 21 सेकंड, 23 सेकंड, 27 सेकंड के हिसाब से ये हो रहा है। अभी रियल क्विज स्टार्ट होगा। 5 को सवाल है, और 5 टॉपर को आपको प्राइज मिलेगा। निमान से हम भेजेंगे, मंजू कोऑर्डिनेट फ्रॉम आवर साइड। बट आपका नाम प्रॉपर लिखना, नहीं तो और किसको पहुंच जाएगा प्राइज। ओके गुड, मंजू स्टार्ट द रियल वन। अब रियल क्विज है, 5 सवाल है, उसके बाद हमारा टॉक होगा, खत्म होगा। ओके, ये ज्वाइन करो। ये एनसीडी का क्विज है अभी, ये पहला वाला तो थोड़ा सा ट्रायल था। विल गिव कपल ऑफ सेकंड्स, ताकि इनकेस आप लोग मिस कर गए हो तो भी ज्वाइन कर लो। चार्ट में कोई चार्ट कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर, चार्ट पर मत करो। मतलब मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज मैं सेशन कर रहा हूँ। क्विज ऑनलाइन करना है।
ओके, जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड्स। ये फाइनल क्विज है, 5 को सवाल है इसमें। ओके, स्टार्ट करें। पहला सवाल आ रहा है अभी आपका स्क्रीन में। मंजू स्टार्ट कर लो, प्लीज स्टार्ट। ओके, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम, जो कि देखा जाता है लोग पार्टी में गए हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, कोई जो जो इंसान पहले ज्यादा ड्रिंक करता ही नहीं था, फंक्शन था, पार्टी था, और उस नेक्स्ट डे उसका हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो क्या होता है एक्चुअली? आर्टेरियल फिब्रिलेशन होता है, कार्डियोमायोपैथी होता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया होता है, और एक्यूट हार्ट अटैक होता है। 4 चॉइस है। आप गूगल भी कर सकते हो, चैट जीपीटी भी पूछ सकते हो। अब आंसर यही पड़ता है ना, अपना प्राइज यही मिलना है वो। देखते हैं क्या हो रहा है आंसर। ओके, मैं तो आप लोग देख नहीं पा रहा हूँ, बट आई थिंक आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। आई थिंक द वेरी गुड रेस्पॉन्स हैज कम। लेट्स सी द आंसर प्लीज। सो या, इस आर्टेरियल फिब्रिलेशन, इसको आर्टेरियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, जो कि हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम नाम से मेडिकली जाना जाता है। नेक्स्ट मंजू। ओके, इसमें एक से ज्यादा आंसर है। आपको कैसा पता लगता है कि आदमी ज्यादा शराब पी रहा है, ज्यादा शराबी है, और वो कुछ लत पड़ गए हैं? मुंह फुला होता है, आंख लाल होता है, गम्स ब्लीडिंग करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, एब्डोमिनल फैट, मतलब पेट बहुत बड़ा होता है। ओके, लेट्स सी द आंसर। चारों के चारों करेक्ट हैं इसके लिए। ये चारों के चारों सिम्टम्स होते हैं जो आदमी ज्यादा शराब पीते हैं नॉर्मल से, उनको चारों के चार लक्षण आपको मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो ये कोई भी लक्षण लेके पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको शराब के बारे में पूछना अच्छा होता है, जरूरी होता है। ये मैं नहीं पूछा कि बिल्कुल शराबी है, मगर ये शराब नॉर्मल से ज्यादा पीते हैं, दे ड्रिंक मोर देन दी व्हाट सपोज टू बी हेल्दी ड्रिंकिंग, है ना। नेक्स्ट। ओके, ये नेशनल फैमिली हाउस होल्ड सर्वे आपने सुने होंगे, कई कुछ साल के अंदर होता रहता है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अल्कोहल, शराब शराब पीना भारत में कम हुआ है, बढ़ा है, इस सर्वे के हिसाब से? मंजूर आंसर। ओके, चलो, इस डाटा के हिसाब से अल्कोहल पीना कम हुआ है। सो करीबन 22% घट के 18% हुआ है डाटा के हिसाब से। अब रियलिटी क्या है अलग बात है, वो तो वी आर सीइंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और अर्थ कि, मगर जो नेशनल फैमिली हाउस होल्ड सर्वे हुआ है पिछले 10 साल में, अल्कोहल लिखा है कि अल्कोहल पीना कम हुआ है ना। दूसरे सवाल सवाल आप पूछोगे तो ये भी बताता है रिसर्च में, भारत के लोग ज्यादा बियर पीते हैं या विस्की पीते हैं? आपको क्या लगता है? सो मैं भी बाद में सवाल लेंगे। सो भारत के लोग ज्यादा हार्ड लिकर पीते हैं, विस्की, ब्रांडी, रम, कंट्री लिकर, जबकि फॉरेन में ज्यादा लोग बियर पीते हैं, जो कि परसेंटेज कम होता है उसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन। सो एक स्टैंडर्ड ड्रिंक को किसको बोलते हैं? एक स्टैंडर्ड ड्रिंक किसको बोला जाता है? परफेक्ट, आई थिंक बहुत बहुत बधाई है सबको कि 30 ml ऑफ विस्की और ब्रांडी को एक स्टैंडर्ड ड्रिंक बोला जाता है। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विथ ऑल ऑफ यू। क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल रखा था क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि 60 ml या 90 ml को स्टैंडर्ड ड्रिंक है, मगर वो गलत है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, 90 मतलब स्टैंडर्ड है, नहीं, 30 ml स्टैंडर्ड है। अक्रॉस अक्रॉस विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, जहां पर 40% अल्कोहल रहता है। बियर में कितना होता है? आई थिंक आई विल टेल लेटर अबाउट दैट। और नेक्स्ट।
लास्ट सवाल है, उसके बाद we'll go to- आप पेशेंट देख रहे हो और उसने बोला कि मैं कभी कभार पी लेता हूँ, कौन सा सवाल लगता है कि ठीक रहेगा? नेक्स्ट सवाल, शराब खराब है, मेरा दूसरा पेशेंट पीता था मर गया, मुझे बता सकते हो कितना पीते हो? थोड़ा जल्दी, टाइम कम हो गया बट या ओके, सो द आंसर मंजू, राइट। सो आई थिंक दिस इज अ फेयरली गुड रिस्पॉन्स कि भाई आप बता सकते हो कि कितना ले रहे हो, ताकि हम आपको आपके बीपी के इलाज में हेल्प कर सके। ठीक है, लेट्स सी द विनर प्लीज मंजू। Abhishek Panda, I know I cannot sort of talk to you because I'm seeing only the panelist here, so मेरा बस में नहीं है. But I think what you can do is just drop your email ID to the panelist Manjul Tikar. So congrats Abhishek Panda, Dr. Aman, Dr. Ankur, Pallavi, Sandeep Jain. I love to probably see you face, but I could not see you at all. Maybe of this, can you get Abhishek Panda on screen? All these 5 people on the screen and tell hello, or it will take time. Yes, If sir. possible, Sure. Just allow me a just second. just congratulate, take a small snap of them, and you can take so that you can. And my print in 10 minutes only. I'll finish it up before time. Abhishek, Aman, Ankur, Pallavi, Abhishek, Sandeep. please accept the request. Okay, meantime, you do. I just go ahead and share other part of the things. I'll take a screenshot of this one. Manju can take a screenshot of this one, and then we have. Yeah, so Dr. Abhishek Panda is here. Could you please switch Congrats, on your Abhishek. camera? If you are in a better position, you can switch on camera. If not, no problem about that. You can unmute yourself. Yeah. Yeah. Okay. I think maybe it'll take a little more time, and let me start my presentation and. Good afternoon, sir. Yeah, Abhishek please. here. Thanks and congratulations, Abhishek, from where you are and sort of which part of the country you work. अभिषेक कहाँ काम करते हैं आप? Sir, we have interacted previously in one of the sessions of Nimans. Oh, that's good. Sir, I am from Odisha, sir. ओडिशा रे कोउ जगह रे? Which place? I know, yeah, it's not telling you. Yeah. Sir, ଏବେ ଅଛି sir assistant professor ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ Government Medical College ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରେ Community So, Medicine Department, sir. Abhishek is telling that he's a faculty assistant professor in medical college at a place in Orissa. Congrats, Abhishek. I think Abhishek, Abhides, let's go ahead for a Yeah, sure. presentation so that we'll Sure. short of time. Once again, Manju, congratulations, Dr. Abhishek. yeah. Right. So let me go my presentation and. So what I sort of Manju, can you share that one, not the Google Doc with everyone? People who join late, they can also find out. Okay. Yes, sir. Yeah. So meantime, my colleague will share a whole Google Doc. In case you miss out, you click the links, you'll get all the presentation. I will take only 5 minutes and stop my presentation. So what I'm going to do in next 5 minutes is to tell you about, in a busy practice, how do you sort of take out 5 minutes of a time or 3 minutes of a time or 2 minutes of time and try to convince a person, can you consider change for yourself? I'll just talk this one and stop it. So the model that I'm going to sort of tell you, first thing, I think we have a small mobile app which this is for ministry app only, Ministry of Health and Family Welfare app we developed at Nimans with PJ and AIMS. You can download the app. It's a free app where you actually find out how to ask questions, what to do next and stuff like that. So Manju will send the link. You can do that part. So this app will help you to ask 5 questions to a person. Is he drinking excessively? Is he using tobacco excessively? And you'll give auto response to that one. Now, after that, after you sort of think, some basic principles of doing the sort of discussion is it should be patient-centered or person-centered. It's not that I advise you do this. Nobody likes this advice. So the discussion is collaborative. I think that's very. तो discussion है दोनों के साथ होना चाहिए, नहीं कि मैं बता रहा हूँ तुम सुन लो और तुम कुछ नहीं हो, मैं बेस्ट हूँ दुनिया में, मैं बताऊंगा तुम सुन लो. So that doesn't work. Okay. Yeah, I think Google documents है. Yeah. Be non-judgmental. हर लोग अपने जिंदगी में तकलीफ में जाते हैं. मैं I was telling of this before that and Pankaj कि एक टाइम में मुझे लगा कि मेरा सोशल मीडिया एडिक्शन कुछ ज्यादा हो रहा है, तो तभी मैंने लगा कि let me come out of this problem and try to handle it. So being judgmental, everybody is human being, everybody is a propensity to get hooked to some pleasurable substance.
चाहे अल्कोहल हो, टोबैको हो, सोशल मीडिया हो। आपको पता है ये जो फोन है ये एटम बम है एक्चुअली, ये अल्कोहल से कोई ज्यादा ही पावरफुल है। हर दिन ओपीडी में मैं एटलीस्ट 2 बच्चे देखता हूँ, इंक्लूडिंग किड्स ऑफ डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग माय चाइल्ड हु हैव स्ट्रगलिंग विद फोन। बी एम्पैथिक, चेंज डजंट हैपन, एक दिन में कोई किसको बदला नहीं सकता आप। एंड गोल ओरिएंटेड, आई विल जस्ट टेल ब्रीफली 5 पॉइंट्स एंड स्टॉप। सो एक निमोनिक है, आप उतने याद रखना, उसको बोलते हैं फ्रेम्स: फीडबैक, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, मेन्यू, एम्पैथी एंड सेल्फ एफिकेसी। सो आई विल जस्ट टेल स्टेटमेंट्स एंड आई विल स्टॉप हियर. Feedback, so this is a discussion between a person who is hypertensive and come to a doctor and or CHO and discussing. डॉक्टर बोल रहा है कि मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड यू सेइंग इज दैट ऑन एवरेज आप 5 से 6 ड्रिंक्स लेते हो सिंगल डे में, मगर आप हर दिन नहीं लेते हो, 2 हफ्ते में 1-2 बार लेते हो. Earlier today we discussed that why the monitoring of blood pressure is important and why the antihypertensive medications is important for health. And these two behaviors, like alcohol drinking even thrice a week or twice a week and blood pressure, are connected. What you consume is called high risk drinking because it may affect your blood pressure. What is your thought about this? So this is the questions. What is your thought about this? So you are eliciting वो आदमी कैसा महसूस कर रहा है उसके बारे में. He wants the person wants his blood pressure control, but he also has drinking once a week or twice a week. So what do you think about that? This feedback. Second question, again, these are doctor statement. If you decide when and if you're ready to reduce alcohol consumption, I will still treat you. This will not affect interaction between you and me. Even if you continue to drink like this, I'm still okay. I'm non-judgmental. I'm not going to stop the treatment. But if you're thinking of reducing or stopping, I am there to help you out. So this is again emphasizing patient responsibility. So the responsibility belongs to the person who is sitting other. I am a catalyst here. Third point, which is about advice. Here you tell, would it be okay if I share some action which can help you improve health and stop and decrease your blood pressure? My suggestion would be that you can think of stop completely or limit the drinking 6 drinks per fewer per weeks. Again, this is there. Last but one. I realize that giving up drinking may be challenging for you, but you can discuss what are the trigger situation and how you can handle it. It's not easy decision. Drinking helps to enjoy, relax evening twice a week. It's a difficult decision, but we are there to help you out. And last point is that could you spend few minutes what you have done in the past, like 6 years back you're not drinking, to handle this one, and how could you work together to make it possible? So these are the 5 points that sort of shared with you, along with the which can be done in a busy practice. I think I'll stop here. I know you're almost 12:32, at 12:30 I'm supposed to stop, and I think I'll pass this to the panelist to take care next part. So I'll share this to you, and you can ask me questions. I'll stop sharing. Yeah, 12:32 I stopped my presentation, and please guide what to do next. So, thank you so much, sir, for this interactive session. Participant engagement was very, very good because I had moderated several webinars, more than 5,000, 6,000, 9,000 even. But this was the active participation, and within very few seconds, they are trying to respond all the quiz. This is very fantastic. And once again, congratulations to Dr. Abhishek Panda. So this is time for the question and answer. So we have a few questions in the Q&A box. So we would like to take. Yeah, the first question from State NCD Cell Gujarat. Dr. Pankaj Kumar is saying he's a project officer. I want to know how I can understand the accurate drinking behavior, meaning alcohol intake behavior of individual. Okay, thanks, sir. Thank you so much for this question. I think in the quiz actually I mentioned some indirect way to know is the person is drinking excessively. Remember, जो बिल्कुल शराबी है तो पता लग ही जाएगा तुम्हें, और वो रास्ते में गिरा होगा घर वाले बता देंगे. वो लोग तो मतलब दे आर एक्सट्रीम ऑफ द थिंग, द प्लेस वेयर यू ऑल वर्क. आपको जो ड्रिंकिंग है, जो कि हार्मफुल ड्रिंकिंग है, मतलब वीकेंड में ड्रिंक करता है मगर इतना पी लेता है कि वो झगड़ा में उतर आता है. सो दोस थिंग्स. सो आई थिंक द फ्यू सिम्टम्स यू कैन सॉर्ट ऑफ थिंक ऑफ ड्रिंकिंग. एक तो चेहरे में, लाइक यू आर सिटिंग क्लिनिक, इफ द पैरोटिड्स आर लिटिल एनलार्ज्ड, गाल फुला हुआ है, आईज थोड़ा सा रेड है,
कल का ड्रिंकिंग स्मेल आ रहा है, बट ही हैज कम फ्रॉम फ्रैक्चर और कोई फीवर के लिए, इज नॉट कम फॉर अल्कोहल टू यू, कोई बीपी मेजर के लिए, पेट एब्डोमिनल ओबेसिटी है, ज्यादा ओबेसिटी है, देन सम स्मेल कमिंग इन माउथ, व्हिच इवन लास्ट ड्रिंक के तो पता लग रहा है कि पिया हुआ है. Yeah, these are the few things, and then you can ask. Can I ask one question with, after बीपी मेजर के बाद? Can I ask one question with you? It is between you and me. मैं ऐसा पूछता हूँ. It's between you and me. Do you drink alcohol little more? So that's the breaking the ice. कोई आदमी खुल के नहीं बताएगा कि मैं तो बीपी के लिए आया था, मैं अल्कोहल क्यों पूछ रहा है. But then if the way you ask question, you will tell. So there are few symptoms early pick up के लिए है ना. Yeah. Sir, thank you so much for addressing this question. And sir, next question is from Additional Director NCD. When should we send someone for de-addiction? Okay. I think, thank you, sir. I actually, that whole thing, I didn't tell that part. My thought, whatever my experience and whatever I've observed, that most of the people who you are going to see will be a borderline wala, heavy drinking or harmful drinking. They may not have reached addiction, but so that's why the app is very useful. The app, I think, Manju sent link. There is something called, I don't know if I can share the app immediately, I can help you out. So there is a scale, I have kept it here. And just give me a time. There's a scale called audit, alcohol use disorder identification test. I'm sharing my screen. You'll be able to know this. Just a minute. Yeah. So this is the app is same app only. Screen version उसका. आप इसमें ना जाओगे कि कैलकुलेटर है यहाँ पर. इसमें आपको देखोगे ऑडिट है. You just click the audit. Okay, sir. Some question will come this question and यहाँ पर लिखा होगा आपको देख लो. So I've given this thing. Now the moment the score comes above 18, Right, sir. it means person is addiction is very high. So then I think it's good that motivate him. Look, you need some extra care. I need to send to a better person. But if you look at the I think I've shared here. I will show you. I've shared here this. If you see this PowerPoint, what you are going to see something different in the practice. You see like this now. So addiction will be a very small, minuscule in top, but what you see is 3-4 conditions. 20%, 50%. And those conditions are, you should definitely able to advise without any pharmacotherapy, a good advice can help. But if you're thinking that audit score is much higher and there's some, like something, somebody drinking heavy, if he stops drinking, there is a lot of sleeplessness, tremor, a seizure is there, a lot of dysfunction is happening, then addiction is developed and sent to an expert. Thank you, sir. Thank you for addressing this question. And also, the link has been already shared from Dr. Manju and myself in the chat box. So the participant can download that particular app to check the audit. Sir, I would like to take one more question from the Ravijit Singh Kora. He's saying, he or she maybe, as per Interheart study, moderate alcohol decrease the incidence of acute myocardial infarction. Any recent update on this? Okay, thank you very much. I did mention in between that, see, look, there is a larger study to find out sponsored by the ICMR, I think, a multi-center study by cardiology people and an Indian study. So the Interheart study, you are right. What the talk is that in the Mediterranean countries where red wine is used in social drinking, they found useful. But that J-serve or U-served curve lost it when they did study in Indian population. It's a very large study actually. I mean, I know one of the cardiologists who was involved. They found we are not actually getting that benefit in our country. So, but then again, when new study will come, will change. Right. But if you ask me honestly, in Indian population, little be careful about giving, because if it comes from a doctor's mouth, it is taken as a very sort of better way. But sometimes be a little careful for suggesting thing. But my advice, if it's possible, specifically, I will tell specifically if there is a family history of addiction. Right. If there is a family history of alcohol addiction, you should definitely know. I mean, I've seen now 25 years generation of addiction family. 60% of alcohol addiction is hereditary. Okay, so Many of us tried alcohol in our life, but none of us got addicted to alcohol. But those people who are the family first generation, second generation alcohol addiction is there, don't advise. But as a doctor, my advice will be that unless person insists they want to drink, that's a different is a ball game. But if you get a chance, tell no, I will advise strongly not to drink.
but decision is yours. You can stop here. Thank you. Yeah, Thank you. thank you, sir. So due to time constraint, I would like to add like one more question because this is creating a lot of stigma to people. So, sir, this is a question from RH Iktapuri. Sorry for the mispronunciation. The question is about tobacco addiction. Nicotine substitute is really helpful? If yes, is there any chances of getting addicted to substitute itself? Okay. Yeah, Yes, sir. I think that's very nice to have so many good questions coming up. Let me Yes, sir. go back Yes, sir. again, just to give it time. So that is the reason when sort of I was developing the app, I realized how to sort of make it knowledge democratization, which Echo, and we all do for a long time. So also the Right, sir. same thing you asked. So you asked the question, is the nicotine patch addictive or not? I'll come back and tell you exactly same thing. Let me go back and look at NRT. If you can see my screen, yes. Maybe the screen is not very. Let me make it enlarge if I can do it. I don't know. Yeah, you can see now. Perfect. This is exactly talking. This is all evidence. So there are. Let's talk about nicotine patch or gum you take. 25,754 people who are tobacco users has undergone randomized control trial. Randomized means one group will get a placebo, one group will get a gum. The chance of quitting is 1.5 times, 1.49 is written. So if the person is in gum, his chance of quitting 1.5. It's not 100%. Nothing is 100% in addictive or any NCTG. All of us know it. But chance of gum is 1.5%. Now the question is, there is a risk of addiction to the gum, which is hardly 1%. And actually, last time in the ministry discussion, I was there in that, there's a lot of debate going on. But look at the harm of using tobacco. And where is the harm of gum? So the question is this. So you look at the data and you decide. But if you ask me, practicing so many years in the months, 1 or 2% use the gum, and sometimes I don't mind. I don't want person to smoke heavily and get cardiac disease. Then Yeah, taking nicotine gum and it's correct, okay. sir. Yeah. Chalo, thanks. Okay. So thank you so much, sir, for addressing this one out question. This was very like highly people having a stigma regarding this using nicotine substitute. Thank you for addressing. And sir, with like we have a lot of questions from the participant side. So what we best can do, participant, I request you to post your question in the conversation tab on the iEcho. We will select your questions and share to the sir. And after getting the answer from the sir side, we will repost them on iEcho and you will get the answer. And yes, sir. So this was really insightful session. Now I would like to invite Mr. Pankaj ji from the ministry to provide a vote of thanks. Pankaj ji, over to Yeah, you. yes, Dr. Prabhat, thank you so much for joining the National NCD National Webinar Series. So session, I think, is very wonderful today. We have seen a very good response in the webinar today. So thank you so much for joining. On behalf of National Training Cell under the National NCD Division, National Program for Prevention and Control of Non-Communicable Disease. So I thank you, Nimhans. I thank you, Dr. Prabhat. I thank you everyone, all the participants from the states, all SNOs, all medical officers who joined this wonderful webinar. And I also thank to ECO team for wonderful coordination of Deshji and everyone. So thank you everyone for giving your time for the wonderful webinar. And I must say that today's webinar is, of course, is a great different experience because this makes interactive. Participant has joined and they have voted for the question. So this is a wonderful idea of Deshji. I think we can do this kind of intervention and initiative in the other webinars also. Sure, sure. Yes, Yeah, sure, thank Pankaj ji. you. We will coordinate with Manjunatha and get the insight how it is going and what are the ways we Yes. can do it. So we will get from Dr. Prabhat sir as well, whatever the insight according to this, then we will practice this as well in the future. Thank you, Dr. Manjunath ji, for the wonderful quizzes you have floated today with our participants, and thank you, Dr. Prabhat sir. Thank you so much for giving a wonderful session on behalf of Ministry and NPNCD National Program. So thank you everyone for joining the wonderful webinar. Thank you so much. So just with want- this, yes, sir. Any sir, take home message from your side? I just thought, thanks, Dr. Mr. Pankaj and Sir. NCD division, I think this is the first chance actually I got to sort of talk to NCD. This is one of the things I love to do because I realized all the colleagues were joined from across country
900,000 colleagues are actually change makers. You would see that people, NCT is big now, NCT is huge, I'm telling you. So I think you are the people who actually can, your advice, a strong advice, will be the most powerful thing for a person who is developing alcohol habit or tobacco habit. I didn't speak in detail because of time constraint, which I can take lecture on the whole thing. But I think that's why I want to thank all of you. Thank everyone who joined, take out time in your working hours, taking time. Thanks and congratulate all the quiz participants first. Learning is a tough thing. I always tell my colleagues, learning is monk, scrolling is monkey. I had a monk mind or monkey mind. Monk is very tough to do. Monkey is easy. Perfect. So I think Perfect. I just want to thank to all of you. Thanks everyone from joining this session. And Manju, what I'll do also in what I printed today, I'll put in the PDF, which you can put in the ICO. People can actually download and see that also. Yes. So, sir, with the same, thank you, sir, once again. And to the participant who were asking about the PDF and all the links of application, everything is available on IACO. After 2 p.m., you can visit the IACO platform, and everything will be available on the content page. So you can download or you can watch online, whatever is your choice. No problem. So, with your permission, Pankaj ji and Dr. Prabhat, we can wind up the session. Bye bye. Thank you, sir. Thank you so much.